The meaning of knowledge is to understand matter, the soul, and the controller of both. And this is even more important than religious scriptures. ज्ञान म्हणजे पदार्थ, आत्मा आणि या दोघांचा नियामक यांना जाणणे हे होय. आणि हे धार्मिक सूत्रापेक्षाही अधिक महत्वाचे आहे. जिस ज्ञानी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भक्ति नहीं की, उसके भीतर मिथ्या देहाभास और जगत का भ्रम बना रहता है. In a knowledgeable person who does not practice devotion after attaining knowledge, there remains a false identification with the body and the illusion of the world. अगर व्यक्ति को सही में यह ज्ञान प्राप्त है तो वह निश्चित जानता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो वह अभी ज्ञान मार्ग का पथिक हो सकता है, पूर्ण ज्ञान अभी नहीं हुआ. साधना में सातत्य जरूरी है. और दूसरी बात, अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अहंकार बढ़ने की संभावना ज़्यादा है. अज्ञान और भ्रम के कारण वह स्वयं को ईश्वर भी मान बैठता है. और भक्ति तो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति की व्याख्या है. भक्ति तो क्या है? भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति है. अहंकारी व्यक्ति कभी शरणागत हो ही नहीं सकता. इफ ए पर्सन हैज ट्रूली अटेन्ड दिस नॉलेज, then he surely understand why devotion should be practiced and to whom it should be offered. If this understanding is not there, then he may still be a traveler on the path of knowledge. Complete realization has not yet occurred, and consistency in spiritual practice is essential. And secondly, one must guard against ego, because on this path the possibility of ego increases in a very high level due to ignorance and delusion. Such a person may even begin to consider himself as a god. स्वयं को ही वो भगवान मान भी बैठता है भ्रम के कारण. डिवोशन मीन्स कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड. एन इगोइस्टिक पर्सन कॅन नेव्हर ट्रूली सरेंडर. जर एखाद्या व्यक्तीला खरे ज्ञान प्राप्त झाले असेल तर तो नक्कीच जाणतो की भक्ती का करावी आणि कोणाची करावी. आणि जर असे नसेल तर तो अद्याप ज्ञान मार्गाचा प्रवासी आहे, त्याला संपूर्ण ज्ञान झालेले नाही. साधने सातत्य आवश्यक आहे. आणि आणखी एक गोष्ट, अहंकारापासून सावध राहिले पाहिजे, कारण या मार्गावर अहंकार वाढण्याची शक्यता जास्त असते. अज्ञान आणि भ्रमामुळे तो स्वतःला ईश्वर समजण्याची चूक करतो. आणि भक्ती म्हणजे परमेश्वराच्या प्रतिपूर्ण शरणागती होय. म्हणजे अपोजिट गोष्ट आहे. अहंकारी मनुष्य कधीच शरणागत होऊ शकत नाही.